This conference will now be recorded. Okay, I hope you're able to see my screen, right? Okay, in previous class we discussed about the VNet and VNet pairing. थोड़ा सा networking के part को और आगे बढ़ाते हैं because in case of networking n number of services are available, so as a admin it's our responsibility, we should know about the concept कि क्या क्या option है, क्या क्या services हमें आनी चाहिए. So next important point is related to the networking is load balancers. So I think we haven't discussed about the load balancer services, right? No, not yet. So any idea about what you think about the Azure load balancer? Not only Azure, any load balancers? Yeah, that's I mean, load balancer it just divert the load from one, if one system is so overloaded, so it's transfer the load to the another one. I mean, the traffic to the another system. Right. So as we know that Azure portal can give us option to set up lots of services, right? We can set up our on web server, we can establish our application server, yeah, file server. If you want to establish your database server, so we can do that. For the maintenance purpose, for the to run your services स्मूथ तरीके से रन करने के लिए Azure establish multiple load balancer, not a single. They establish some multiple load balancers. Like as I'm going to start from very basic. The first one is load balancer. You can also consider as a normal load balancer. Second is application gateway. Third important point is Azure traffic manager. And fourth one is Azure front door. Right? So these all are the load balancer services which is available on Azure. And it's our responsibility, we should know about the gap between these load balancer services. तो एक एक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि किस लोड बैलेंसर का क्या टास्क होता है और what are the prerequisites to establish a load balancer services. Okay, so let's start from the very basic, and we also need to know about the gap between each other क्योंकि as a admin it's our responsibility कि हम अपने client को guide करें, हम अपने client को इन्फॉर्म करें कि कौन सा लोड बैलेंसर उनके लिए सुटेबल रहेगा, कौन सा लोड बैलेंसर उनके लिए बेस्ट रहेगा. इज दैट क्लियर? Yes. Okay, so talk about the concept of these load balancer services. नॉर्मल लोड बैलेंसर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. Okay, let's start from the very basic. जो नॉर्मल लोड बैलेंसर है, ठीक है, इट्स अ कॉमन लोड बैलेंसर फॉर इंटायर सर्विसेज. ठीक है, because the normal load balancer can work over a TCP and IP. Normal load balancer can perform the task over a TCP/IP and it support all types of protocols. Means 65,535 जितने भी लॉजिकल पोर्ट्स है ना, ये सभी लॉजिकल पोर्ट्स आपके नॉर्मल लोड बैलेंसर में काम करते हैं. It means that if you want to set up your FTP load balancer, HTTP load balancer और SQL load balancer या फिर आपको VPN का load balancer तैयार करना है, so you can proceed with TCP/IP protocol. You can proceed with normal load balancer. क्योंकि ये जो load balancers है, ये जो load balancers की service है, it can support for each and every load balancer service. Is it okay? But the load balancer is not supported ICMP and Not messaging protocol, yes.
Well, somewhere I read about that's the limitations of load Be- balancer. because नहीं possible ही नहीं है ना. हाँ. In case of mailing services or in case of what we can say that ICMP protocol, possible ही नहीं कि हम load balancer को establish कर सकें. Because in case of ICMP या कोई भी mailing services की बात करें ना, it required a proper setup. आप exchange की बात कर लें या फिर Office 365 की बात कर लें, तो Office 365 में तो I don't think कि किसी load balancer की requirement रहेगी, क्योंकि जो hardware setup है ना, वो Microsoft खुद ने establish कर रखा है. अगर आप अपना ऑफलाइन एक्सचेंज इस्टेब्लिश करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपको क्लस्टर बना करके सर्वर को इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? Yeah. तो दैट्स व्हाई. Sorry, can you repeat the same thing? I mean, ओके, तो मेलिंग सर्विसेज को इस्टेब्लिश करने के लिए वी हैव अ टू डिफरेंट ऑप्शन. यू कैन प्रोसीड विद ऑफलाइन में आपका एक्सचेंज सर्वर इस्टेब्लिश करना होगा लोकल में, एंड ऑनलाइन के केस में वी हैव अ ऑफिस 365 पोर्टल. So offline के case में, for example, you establish one exchange server and created up to 1000 mailbox and it's really difficult to manage by single server. तो उस केस में आपको क्लस्टर लगाना पड़ेगा या आपको वर्टिकल स्केलिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप अपने सर्वर की ही कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे. या तो क्लस्टर लगाइए या फिर आप एग्जिस्टिंग सेटअप को, एग्जिस्टिंग सर्वर को आप वर्टिकल स्केलिंग के जरिए उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे. तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन अभी तो खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे मीन्स ऑफलाइन एक्सचेंज का. तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन क्या करते थे, दे एस्टैब्लिश क्लस्टर, और क्लस्टर में 2-3 सर्वर एस्टैब्लिश करके मेलिंग सर्विसेज को हैंडल कर लेते थे कि इन केस अगर एक सर्वर डाउन हुआ तो दूसरा जो सर्वर क्लस्टर के ऊपर वो हैंडल कर ले. ऑफिस 365 पोर्टल के अंदर किसी भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि ईच एंड एवरी सेटअप, हार्डवेयर सेटअप मैनेज बाय द प्रोवाइडर. Azure Office 365 अपनी तरफ से सेटअप को एस्टैब्लिश कर लेता है एंड दे कैन परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू द ऑल रिसोर्सेज. वो बैकएंड में रिसोर्सेज है, वो डिस्क्लोज भी नहीं करता कि हम आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं. इफ यू परचेज द लाइसेंस लाइक एज E3 लाइसेंस, E2 लाइसेंस, तो वो लाइसेंस के बिहाफ पे काम करता है. क्लियर? Yeah, that's a SaaS service. So SaaS service, yes. Now, another important point is related to the application gateway. It's really important for every architect, admin, and DevOps. तो इस केस में क्या होता है ना, it work for two important protocol, HTTP and HTTPS. ठीक है, means it's correlated to the web services. ये जो establish किया गया है वो basically web services के लिए establish है. If you want to host your application, if you want to establish your web server, then you can proceed with application gateway. What are the features contained by the application gateway? तो इस केस में हमें मिल जाता है WAP का feature. It gives us option to configure SSL certificate, custom domain, right? It gives us option of scaling. ये सभी फीचर्स आपके अवेलेबल रहते हैं in case of application gateway, but we are able to use the application gateway for HTTP and HTTPS. Means वेब सर्विसेज के लिए अगर आप अपना लोड बैलेंसर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एंड यू वांटेड टू होस्ट योर what we can say that वेबसाइट इन द सेंस कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट आप लॉन्च करना चाहते हैं, कोई वेब सर्वर आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या एप्लीकेशन सर्वर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, so in this case the application gateway can help us. Clear? Next, another point is related to the Azure Traffic Managers. The Azure Traffic Manager, as per the name suggests, as we know that Azure established our data center in different geographical location. So in case of Traffic Manager, क्या होता है? If you establish your web server in location of maybe USA and one more server you establish in India location, so what happens? If you want to create a LB between two different geographical locations,
तो अलग अलग लोकेशन में आपने वेब सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है एंड यू वांट टू कॉन्फ़िगर द लोड बैलेंसर, सो इट गिव अस ऑप्शन टू क्रिएट दो Okay. अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में एलबी तैयार करने के लिए केवल एज्योर ट्रैफिक मैनेजर आपकी हेल्प करेगा। लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे या एज्योर फ्रंट डोर हमारी हेल्प नहीं करता, because they are responsible to perform a separate task. Is it okay now? Mhm. Right. Next, another Okay. point, Sorry to interrupt you. Can I ask another thing? please. That's that means the traffic manager what it does. अगर मैं इंडिया से अगर सर्वर को एक्सेस करता हूँ तो I'll be routed I mean routed to the Indian server. अगर मैं यूएसए से अगर एक्सेस करता हूँ वेबसाइट को तो I'll go to the USA server, right? Or Exactly. something else. No. So actually, Azure Traffic Manager can give us up to 4 to 5 different method to manage the load or balance the load. Azure Traffic Manager 4 से 5 एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है कि आप अपने ट्रैफिक मैनेजर को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द types of features which is contained by the Azure Traffic Manager. The method of transferring data, like as it gives us option to set up the load, like as we are authorized to set up the load कि हमें यूएस के ऊपर 25% ट्रैफिक भेजना है और इंडिया के सर्वर पे हमें 75% ट्रैफिक भेजना है। तो जो लोड है यू कैन मैनेज इट मैनुअली, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड, diversion, you can divert your traffic as per the requirement. Second, you can set up your server in two format, active and passive. कौन सा सर्वर एक्टिव रखना है, कौन सा सर्वर पैसिव में रखना है, फॉर द लोड बैलेंसिंग यू कैन मेक इट बाय itself. तीसरा जो रहता है, you What the can meaning for active and passive in the case of servers? sorry, I mean, what the meaning of active and passive? If, that means what? Means if USA is active, so all routed, I mean, all traffic goes to USA, and then it will go to India, or exactly, yes. okay, all We right. can set up the load 25%, 75%, 50%. You can divide the load active passive, and one or two different options are also available as per traffic. Yes, as per traffic in the sense कि जितनी ट्रैफिक आ रही है ना, जिस भी लोकेशन से ट्रैफिक का लोड ज्यादा रहेगा उस लोड के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक सेटअप कर देगा कि हमारा जो रिक्वेस्ट है किस सर्वर पे जाना चाहिए। Okay. क्लियर? All तो right. ई कॉमर्स बिजनेस के लिए इफ यू स्टैब्लिश योर बिजनेस इनटू वर्ल्ड वाइड, सो आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि अगर हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट अपनी एज्योर पे स्टैब्लिश कर रखी है तो वी कैन प्रोसीड विद एज्योर ट्रैफिक मैनेजर, because it can help us to manage the load balancers features as per the requirement. हम अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस कर सकते हैं। Another important point, Azure front door. So as per the name suggests, the meaning of Azure front door is a kind of CDN, means content delivery network. तो content delivery network में क्या होता है ना कि for example Azure establish our data center in different geographical locations like this, right? And you establish your web server in location of maybe India. आपने इंडिया लोकेशन में एक वेब सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है एंड यू स्टार्टेड योर ई कॉमर्स बिजनेस टू टारगेट योर इंडियन कस्टमर्स। अब आपको यहाँ से ठीक ठाक मीन्स एक साल के अंदर आपको ठीक ठाक यहाँ से ट्रैफिक मिलने लगा, लगभग 25 से 30 हजार ट्रैफिक इन इंटायर मंथ। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड अच्छे खासे ट्रैफिक आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर परचेजिंग समथिंग, वेबसाइट से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स मीन्स 1 से 1.5 साल के अंदर आपको कुछ ऐसे भी कस्टमर्स मिले जो बाहर से हैं, मीन्स यू आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम दुबई लोकेशन एज वेल, राइट?
धीरे धीरे आपको आपका जो टोटल बिजनेस है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 75% यहाँ से और 25% आपको दुबई से बिजनेस मिलना स्टार्ट हो गया। मीन्स you are responsible to you can send the product to the Dubai location, तो ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट इतना भी रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है कि आप उस लोकेशन में सर्वर इस्टेब्लिश कर सकें। यू नो दैट अगर आपने डेटाबेस अपना या वेब सर्वर आपने इंडिया लोकेशन में लगा रखा है और दूसरी किसी जियोग्राफिकल लोकेशन से आपकी वेबसाइट एक्सेस की जाती है, तो लेटेंसी आना नॉर्मल सी बात है। मीन्स कहीं ना कहीं स्पीड का इम्पैक्ट पड़ेगा, लेटेंसी आएगी। तो इफ यू वांट टू इनहैंस योर इंक्रीज योर बिजनेस इन दुबई लोकेशन और अनदर कंट्रीज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो चार चीजों पे ध्यान रखना होगा। लाइक एज स्पीड के ऊपर, वेबसाइट की स्पीड के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, और एटलीस्ट ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द हम उनको प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें। तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश अ वेब सर्वर इन लोकेशन ऑफ दुबई। आप दुबई लोकेशन में कोई भी वेब सर्वर स्टैब्लिश नहीं करना चाहते बिकॉज उतना भी ज्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है। तो इन दिस केस Azure will help us and we can set up a CDN। CDN क्या करता है ना कि जो आपका वेब सर्वर है, इस वेब सर्वर की एक इमेज, नॉट इमेज, एक कैश मेमोरी बना देता है इन लोकेशन ऑफ जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, इमेज और यू कैन से दैट कैश। कैसे? तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो कस्टमर आपके यहाँ से डेटा एक्सेस कर रहे थे, अब वो इमीडिएटली अपने नियर बाय डेटा सेंटर से वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशंस को इजिली एक्सेस कर पाएंगे। तो जो ये टाइम लगता था यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होने में, वो आपका सीडीएन ने रिजॉल्व कर दिया कि अगर आपको आपके कस्टमर 40% तक भी बढ़ जाते हैं या 50% तक भी बढ़ जाते हैं, तब भी आपको कोई भी वेब सर्वर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो सीडीएन है इट विल टेक केयर स्पीड के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, और भी जो प्रीरिक्विजिट्स होंगे वो सभी मैनेज। Okay. क्लियर? Yeah. तो these all are the load balancers। ये सभी अपने पास लोड बैलेंसर की सर्विसेज हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन रियल इन्वायरमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए। Done। So can we proceed for practical? Yes, yes. I'm going to show you the practical of load balancer कि कैसे इसको establish किया जाता है, क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है, और क्या क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं to establish a load balancer। In case of load balancer, the prerequisites are, हमें दो वेब सर्वर इस्टेब्लिश करने होंगे। Then we'll add the load balancer and attach the both web server। जो पब्लिक आईपी एड्रेस लोड बैलेंसर हमें प्रोवाइड करेगा, we will access and share the public IP address to our customers। जो भी हमारे कस्टमर हैं, जो हमारी वेबसाइट देखते हैं, जो हमारे डेटाबेस तक रीच करते हैं, उनको हम अपने लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बेनिफिट्स क्या होगा कि अगर आप 5000 हिट्स हमें मिल रहा है हमारी वेबसाइट पे, 5000 हिट्स मिल रहा है, it will divide 2500 then 2500। ये क्या करेगा, हिट्स को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। इसका बेनिफिट ये है कि आपका डाउन टाइम नहीं आएगा। पहला, एक्टिव पैसिव में भी काम करता है ये लोड बैलेंसर, ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काम करता है। मींस अगर ये लोड डिवाइड हो रहा है 5000 की जगह 2500 या 2500 डिवाइड हो रहे हैं, तो जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी, उसमें किसी भी वेब सर्वर को लोड नहीं पड़ेगी। प्लस इफ एनी चांस कि वेब सर्वर डाउन हो गया, फर्स्ट डाउन हो गया या सेकंड डाउन हो गया,
तो उसका अल्टरनेट आपके पास है। अल्टरनेट सर्वर आपके सारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उनको रिजॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, एंड इट गिव अस इनफ टाइम टू सेट अप अनदर सर्वर अगर कोई वेब सर्वर डाउन हो चुका है तो। दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ लोड बैलेंसर। अगर हम बात करें प्री रिक्विजिट्स की, अगर हम बात करें सेटिंग्स की या मिनिमम रिक्वायरमेंट की, तो क्या क्या आपको सेटअप करने पड़ेंगे। पहला, क्रिएट टू वेब सर्वर, नॉट वेब सर्वर, नॉर्मल वर्चुअल मशीन को वेब सर्वर बनाएंगे हम। सेकेंड, VM must be in same availability set। दोनों वर्चुअल मशीन आपकी एक ही अवेलेबिलिटी सेट में होनी चाहिए। तीसरा, इंस्टॉल IIS सर्विस। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो IIS, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो यू कैन प्रोसीड विद अपाचे। एंड क्रिएट डमी वेबसाइट। आपको दोनों ही वेब सर्वर में एक एक डमी वेबसाइट तैयार करना पड़ेगा। नंबर 5, ऐड पोर्ट नंबर। 3389 कॉमन है ही है विंडोज के लिए, और वेब सर्वर के केस में पोर्ट नंबर 80 और 443 अगर आप HTTPS इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। This is the prerequisite to establish our load balancer. So I'm going to show you the proper step कि कैसे load balancer को establish किया जाता है और उसका एक रिजल्ट देखते हैं। Can we proceed for practical? Yeah. The important points related to the load balancers, what we need to do, we need to create a setup for LB। Means सबसे पहले हमें instances तैयार करने हैं और instance should be a part of same availability set। जो भी instance हम create करेंगे एक ही availability का part होना चाहिए। Let me start from the virtual machine creation। Resource group, type the name of your virtual machine. So I'm going to proceed with web 1. Japan East is our location. You must need to create an availability set. So I'm going to select availability set, create, type the name of your availability set, testing set, for domain to update domain. Click OK. In case of image, I am going to proceed with Windows Server 2016. (2016, 2019, 2012, anything, but your what we can say, the free trial account should be support. Let me check with 2012. Configuration, I'm going to proceed with 2 core of CPU and 4 GB of RAM. Username common web. (3389) for RDP, HTTP and HTTPS for to access the web services. No need to make any changes. That's it. Our virtual machine is available in location of Japanese and domain is our container. Next. Next. Review and create. So now we successfully proceeded to create the virtual machine.
It will take time because we are able to create and proceed for next virtual machine once our first VM is ready to use, because it will create the availability set. So wait for a few seconds, and after that we'll proceed for the next virtual machine. Can I ask you a question meanwhile? Yeah, please. Just say I made it in a web app on one machine, right? I didn't use the availability zone. Can I do it through the scale out? Can I increase the instance? That will be the same thing. Same thing, same thing. Actually, what happened in case of style set, it will help you in both way, like as the load balancer plus scaling. Okay. तो while creating the VMS services, आप उसी टाइम पे लोड बैलेंसर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. राइट. क्योंकि मैंने एक वेब ऐप बना लिया था, तो आई थॉट आई शुड कॉन्फ़िगर अलोंग विद यू. लेकिन मैंने एक ही वो बनाया, एक ही मशीन पे बनाया था. तो आई थॉट आई शुड इंक्रीज द इंस्टेंस. तो मैं वो स्केल आउट का चेक कर रहा था, बट द थिंग इज व्हाट द सेम थिंग बिकॉज ऑफ द आई मीन the joining it's not allowing. That's saying autoscale is currently not available for this resource. Resource pricing tier might have been changed, and autoscale is not supported the new pricing tier. Actually, in case of auto scaling, in case of VMSs, you can proceed with 2 virtual machines. Because in case of free trial account, I think we are eligible to create only 3 virtual machine in same cluster, or 2 virtual machine in same cluster. Okay. Right. It's also depend upon the quota that we are using according to the subscription. वो तो वो है, that's limited to 5. 5 से ज्यादा रिसोर्सेज तो बनाता ही नहीं है. I think that's a limit. ये भी हो सकता है, मशीन का भी लिमिटेशन हो सकता है. I selected that's Windows 2016. हो सकता है शायद उसकी limitations हो. So I'll change the image and then I'll check again. Fine. We'll also try to establish our load balancer using VMS services. तो कहीं ना कहीं एक बार practical देख लेंगे तो idea लग जाएगा. ठीक है? Okay. Yeah. Our load balance, our virtual machine is ready to use. एक VM ready हो चुका है अपने पास. I'm going to create another virtual machine as well. क्योंकि we must need to create minimum 2 virtual machines ताकि हम load balancer के topic को proper तरीके से समझ सकें. So meanwhile, I'm going to create a new one more virtual machine and should be a same cluster. Cluster in the sense I'm talking about the container, means sorry, not container. It's a availability set. So I'm going to set availability set, and in the availability set, testing set that we created, no need to make any changes. I'm going to select the operating system. According to the quota, make sure your operating system is applicable for same subscription. So let me select the same operating system 2012.
I'm going to proceed with same operating system 3389, port number 80, HTTPS. And one more important point, virtual machines should be in same cluster, means same availability set that we created, testing set. No need to make any changes. 80443 and 3389. Review and create. This is the first prerequisite as per the agenda. Create two virtual machine, then should be a same availability set. After that we'll install the IIS service, क्योंकि अपने पास जो है वो विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, so we will install the internet information services and then a dummy website, and after that we'll proceed for the LB. IXM में तो दोनों मशीन्स में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना? यस, अभी के लिए हम दोनों में कॉन्फ़िगर करेंगे बिकॉज वी वांटेड टू चेक कि लोड बैलेंसर काम कैसे कर रहा है। रियल इन्वायरमेंट के केस में क्या होगा कि हम डेटा के लिए एक डेटाबेस लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है सर्विसेज को एक्सेस करेंगे। अभी हम सेपरेट कॉन्फ़िगर करेंगे, बट इन रियल इन्वायरमेंट आईएएस सर्विस दोनों में इंस्टॉल करके दोनों का जो पाथ है एक ही लोकेशन पे देना पड़ेगा, क्योंकि रियल इन्वायरमेंट के केस में हमें एक ही डेटा चाहिए हर एक लोकेशन पे, करेक्ट? Okay. Now, are both virtual machines ready to use? We just need to take the RDP to install the IaaS services. So I'm just going to take the RDP of both virtual machine. ये वेब सर्वर 2 है, डाउनलोड RDP. Meanwhile, I'm going to take the RDP of second virtual machines as well.
Now we successfully connected both web servers. Second step, we just need to install the इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज और इसमें एक डमी वेबसाइट, दोनों में सेपरेट डमी वेबसाइट आपको तैयार करनी है बिकॉज वी वांटेड टू चेक कि आपका जो डेटा है वो अलग अलग वेब सर्वर या अलग अलग लोकेशन से आ रहा है. आई एम गोइंग टू इंस्टॉल एड रोल एंड फीचर्स. नेक्स्ट 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 एंड we must need to select internet information services. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वेब सर्वर IIS that can help us to set up our own website. As it is, add role and features. Internet information services, next, and install. Fine. So after installation of internet information services, what you need to do, just need to create a one dummy website. This PC, C drive, intpub, www-root, and open internet information services with notepad. Make a changes like as this is test web server 1. As it is same, we need to establish in our web server 2 as well, ताकि हम जब वेबसाइट एक्सेस करें अपने लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी एड्रेस से तो हमारा जो रिक्वेस्ट है कभी वेब सर्वर 1 रिजॉल्व करे, कभी वेब सर्वर 2 रिजॉल्व करे. दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ लोड बैलेंसर सर्विसेज. Okay, done. Click OK. C drive, intpub, www-root, internet information services, notepad. और यहाँ पे हम चेंजेस कर लेते हैं. दिस इज टेस्ट वेब सर्वर 2. We successfully configured 2 web server in different servers. Proceed to create a load balancer, network, and this is the panel where we can create a load balancer. We have a load balancer, traffic manager, front door, and application gateway. So our responsibility to create a normal load balancer. Create.
provide same location. Type the name of your load balancer. Like I'm going to proceed with training LB. Three different type. We have a three different way to create our load balancer: standard, gateway, and basic. So actually it's related to the SKU. The meaning of SKU is a stock keeping unit. बेसिक के केस में अप टू 99 वर्चुअल मशीन हम ऐड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड के केस में 1000 एंड गेटवे के केस में अकॉर्डिंग टू द सबनेट दैट यू हैव। जितना भी सबनेट हम एस्टैब्लिश करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद स्टैंडर्ड टाइप में पब्लिक, यस, बिकॉज वी वांटेड टू एक्सेस आवर load balancer, our web servers from outside the network, so that's why proceed with public. No need to make any changes. Next, this is front end IP, right? The meaning of front end IP is a public IP address of our load balancer. So I'm going to add a front end IP, LB public IP. I don't have a existing public IP address, so please create new. The first step, front end IP. Second step, backend pool. So backend pool क्या है? It can help us to add the virtual machines. Test domain vnet add, it will redirect you on page of VMs. तो ये हमने दो virtual machine तैयार कर रखी थी. Select both, add, save it. Another important point is inbound, as per the name suggests. यहाँ पे आपको एक load balancing rule लगाना पड़ेगा ताकि जो बाहर से ट्रैफिक है वो एक्सेस हो सके. Class rule, front end IP, backend pool, port number 80, backend port number 80. Health probe, we must need to create a health probe. Health probe में कुछ भी नहीं है, that can help us to decide the types of protocol. Simple. Click add. No need to configure outbound. Next. Next. Review and create. And what we can configure in outbound rules? Not required to configure outbound. Okay, our load balancer is ready to use. So what we need to do, go to resources, select front end IP. We are getting one public IP address 20.89 something. Copy करेंगे, paste on any browser. We are getting a response from this is test web server 1. ठीक है, अभी जो हमें मिल रहा है रिस्पॉन्स वो वेब सर्वर 1 से मिल रहा है. दूसरे ब्राउजर पे चेक करते हैं इसको, सेमी पब्लिक आईपी एड्रेस को. We are getting a response from web server 2. IP वही है, बट लोड बैलेंसर की वजह से कभी रिक्वेस्ट हमारी वेब सर्वर 1 पे जा रही है, कभी 2 पे जा रही है. एंड ये जो एल्गोरिथम है बैकएंड का, ये हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड बाय प्रोवाइडर. तो यू कैन से दैट कि एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स
नंबर ऑफ हिट्स आएंगे या कम हिट्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग ये जो है लोड को बैलेंस करता रहेगा अपने बैकएंड की तरफ। हम यहाँ पे मैनुअली कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते, हम केवल वर्चुअल मशीन को इंक्रीज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इन आवर लोड बैलेंसर, या रिमूव कर सकते हैं। दैट्स इट। Okay. इज इट ओके? This is the actual work of load balancer services. Please let me know if you have any question. That's clear to me. एक जो लास्ट पे हमने किया था कि आउटबाउंड के अंदर कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होती है नहीं? इनबाउंड तो Actually, हमने कर दिया था। हाँ ठीक है। एक्चुअली लोड बैलेंसर नॉट लोड बैलेंसर, अगर हम इनबाउंड एंड आउटबाउंड की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनबाउंड, द मीनिंग ऑफ इनबाउंड, अगर आप इनबाउंड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर 3389 को कॉन्फ़िगर कर दिया फॉर एग्जांपल। So it means that the meaning of inbound, you are distributing the services. अब अपने आरडीपी की सर्विस को 3389 के जरिए बाहर के बंदे जो हैं, जो क्लाइंट्स हैं हमारे, जो कस्टमर्स हैं, उनको हम एक्सेस दे रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉन्फ़िगर द 3389, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट यहीं पे अगर आपका कोई वेब सर्वर, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर ऑन प्रीमाइसेस पे है और आप इस एसक्यूएल सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आउटबाउंड लगेगा, आई थिंक, राइट? राइट। अगर सर्वर मतलब एप्लीकेशन कहीं पे है और डेटाबेस कहीं हो, अगर डेटाबेस कहीं सेपरेट है तो उस केस में आपको पाथ देना पड़ेगा कि नहीं, 1433 को हम अलाउ करना चाहते हैं, तभी हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर डेटा जो जो बंदे एक्सेस करेंगे वो हमारे एसक्यूएल सर्वर तक पहुंच पाए। राइट। ठीक है? ये तो नॉर्मल केस में अगर आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इसमें स्टैटिक वेबसाइट में किसी भी आउटबाउंड सर्विस को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डेटाबेस वगैरह लगाना चाहते हैं या और कोई सर्वर लगाना चाहते हैं इन केस विद आवर लोड बैलेंसर, दैट टाइम रिक्वायर्ड, अदरवाइज नहीं। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, तो ये अपने पास हुआ लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट। इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे अबाउट एप्लीकेशन गेटवे, क्योंकि वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि एप्लीकेशन गेटवे कहीं ना कहीं लोड बैलेंसर से ज़्यादा प्रोटेक्टेड माना जाता है, सिक्योर माना जाता है, क्योंकि वो हमें एसएसएल ऑप्शन देता है, गिव अस ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर डब्ल्यूएएफ, और साथ ही साथ आप जब भी लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करते हैं इन फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन गेटवे, that time you must need to configure virtual machines in VNet. आपको VNet में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। But Is it okay? somewhere I have read out that application gateway normally application layers पे काम करता है और traffic layer पे भी, fourth layer पे भी काम करता है। Exactly. Load balancer तो fourth layer पे ही करता है। Correct. That's only for traffic. Application 4 और 7 दोनों पे करता है like firewall, और सिर्फ 7 पे ही करता है? No. Application layer can perform the task on first layer, means not first layer, seventh layer, and also can perform the task over a transport layer. Okay, and that's a fourth layer, right? Okay. Fourth layer. All right. Though ठीक it's है? secure, तो so that's work on the application layer. right. तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यू कैन मैनेज योर सिक्योरिटी थ्रू द एप्लीकेशंस, एंड WAF वगैरह की सर्विस उसमें हमें मिल जाती है, SSL की सर्विस मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो बेटर हो जाता है। डन? Yeah. तो एप्लीकेशन गेटवे, कैन वी डू इट टुमारो? Yeah, sure. आज के लिए बहुत है, क्योंकि एप्लीकेशन गेटवे पे ये मैं तब तक इसका प्रैक्टिकल भी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उसमें ये रहेगा कि वीनेट हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो वीनेट हमने तैयार करना पड़ेगा, 2 सबनेट बनाने पड़ेंगे, तो उतना ज़्यादा टफ वो भी नहीं है, जस्ट लाइक अ सेम। ओके, सो विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम, और रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ एक दिन में, ठीक है? मेरे तो ये है ना कि साथ में मेरे को टेराफॉर्म में भी करना होता है, तो आई हैव शॉर्ट टाइम। ओके, ग्रेट, सही है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।